Yesterday itself, the Lok Sabha had voted to in fact expel Mahua Moitra, who was in fact facing probe in a cash for query case. The Trinamool Congress leader was in fact expelled from the Lok Sabha after an ethics committee report recommending her expulsion from the parliament was tabled, and of course the Lok Sabha had ruled in favor of her expulsion. Meanwhile, at this point of time, a political storm has erupted. A war of words has taken place yesterday itself after the decision was made by the Lok Sabha. The INDIA bloc opposition leaders had in fact staged a walkout, and meanwhile there are in fact reactions coming in from Bharatiya Janata Party leaders who have lauded Mahua Moitra's expulsion. Let's take a look. There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. There is no लोकतंत्र में एक सांसद के रूप में महुआ के द्वारा जिस तरह का अपराध किया गया, उससे स्पष्ट झलकता है कि विदेशी शक्तियों के हाथों में इन लोगों ने लोकतंत्र दे दिया। दुबई से एक्सेस होना यह स्पष्ट दिखलाता है कि टीएमसी का भी मानसिकता क्या है। ममता दीदी को कार्रवाई करनी चाहिए, ममता दीदी ने कार्रवाई नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र है और संसद के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई हुई उससे स्पष्ट झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रही है। Was about to happen, we were sure that this would happen because anybody, whoever it is not above the law. And Mahua Moitra, she has played with the security of the nation, and still she doesn't have any shame. She has been trying to confuse the matter and saying that, because she was questioning against Adani and Modi ji, that's why she was removed. No, not at all. You can question about anybody, but you have played with the security of the nation by sharing your password with somebody, who is not even a citizen of India, at not once, not twice, but 51 times. Mahua Moitra was my esteemed colleague in the Lok Sabha, and she has been expelled from the Lok Sabha. This saddens me too. But having said that, let me tell you that it's not a question of being a man or a woman. It's a question of being a responsible parliamentarian. We cannot behave in a manner which is unbecoming of a parliamentarian. There are certain ethical standards to which we need to conform. Mahua Moitra's conduct, unfortunately, was unethical by nature. All right, there, of course, we've seen reactions from Bharatiya Janata Party leaders. Meanwhile, the opposition leaders, particularly from the INDIA bloc, have hit out at the Bharatiya Janata Party and have called this development a politics of vendetta. Let's, in fact, listen in to their statements. They killed. मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. दे किल द डेमोक्रेसी, दे डिच द पीपल. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mahua will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया. मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है. सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द
प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। नया पार्लियामेंट, नया कानून, आवाज, कोई भी अदानी के खिलाफ बात करेगा उसका आवाज बंद कर दिया जाएगा। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है महुआ मोइत्रा वाला इंसिडेंट। महुआ मोइत्रा का बोलने नहीं दिया पार्लियामेंट में, और महुआ मोइत्रा का आरोप का ऊपर उनका क्लियर करने के लिए मौका नहीं दिया पार्लियामेंट में, और कमेटी में किसने कंप्लेंट किया वो उद्योगपति, उसका बुलाया ही नहीं, और किसने कितना पैसा दिया, किसने पैसा, कहां से पैसा है, कितना पैसा किसका पास है, उसका बारे में कोई भी सबूत भी नहीं मिला। They wouldn't allow her to speak. So the very idea behind expulsion is quite sure that, we are quite sure that they were very unnerved. They're very scared of her because she raises issues for which they are very uncomfortable. So BJP, anything you speak against BJP and you're in trouble. Is that the signal that they are given, that if you heckle us, if BJP is heckled or questioned, then it can go to such that you will be expelled from the house? So today what we saw was, even for that matter, Mr. Heer Nandani. Why was he not even called to depose before the ethics committee? So it is all very grey and non-transparent and unjust, and all steps were taken that you will try to curb the power of a Mahila Sangsad. A history to happen in the new Parliament House. This is a history which has been created by the central government and more particularly the members of the Parliament. What we have seen today, we have seen that the Parliament, by raising only their voices, have actually expelled a woman, single woman MP, Mahua Moitra. देखिए, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा जी को इन्होंने एक्सपेल किया है, पूरी जो प्रक्रिया है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जो भी व्यक्ति केंद्र सरकार के खिलाफ प्रखर होकर आवाज उठाता है या उठाती है, उनको किसी न किसी प्रकार से ये षड्यंत्र करके फंसा लेते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको संजय सिंह जी के केस में भी दिख जाएगा। महुआ मोइत्रा जी भी उसी प्रखर तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाती थी। जिस भी दिन से ये मुद्दा शुरू हुआ, उस दिन से इस देश में किसी के मन में ये संदेह नहीं था कि इसका अंत में परिणाम क्या आने वाला है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज सदन के अंदर बृजभूषण शरण सिंह हैं, पर महुआ मोइत्रा जी को निष्कासित कर दिया गया है। ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है कि कोई भी अगर लोगों की आवाज़ बनता है तो उसको कैसे दबाया जाए। आप देखिए, संजय सिंह जी और महुआ मोइत्रा जी दो ऐसी मुखर आवाज़ें थी जो लगातार ये डिमांड कर रही थी कि अडानी के ऊपर जो मैसिव करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच हो। तो ये भाजपा की एक कोशिश है ये आवाज़ों को दबाने की, जिसमें वो सफल नहीं होगी। हम महुआ मोइत्रा जी के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा को जो गवाह थे उनको क्रॉस एग्जामिन करने का हक नहीं था? क्या हमारे कानून में नेचुरल जस्टिस ये नहीं कहता कि अगर कोई आरोप करता है, कोई गवाही देता है तो उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाए कि सच गवाही है, झूठ गवाही है, उसका क्या उद्देश्य है गवाही देने का? वो मौका नहीं दिया गया। और बहुमत के आधार पर एथिक्स कमेटी में भाजपा के सांसद थे, उन्होंने उनको मौका ना देते हुए, पूरी बात भी नहीं हुई थी, थोड़ी देर के लिए आई और जो अभद्रता से जो उनके सलूक हुआ, जो गलत तरीके से प्रश्न पूछे गए, चली गई वहां से। तो उन्होंने फिर उनको कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इनको निष्कासित करना चाहिए और आज वो निष्कासित हो गई है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है?
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.